So we have seen that in Michelson-Morley setup, we have divided the wavefront in two parts. One is reflected, one is transmitted, and we had tried to find the path difference, the time difference and path difference between these two rays which travels horizontal and in vertical direction, right? And we have arrived at that time difference was du square c cube, and the path difference was du square c square, where d is the distance between point A and B, and u is the relative velocity of earth with respect to ether, and c, where c will be the velocity of light. So इतना पाथ डिफरेंस आना चाहिए आपका, अगर हम मानते हैं कि अर्थ सरफेस इथर से ड्रैग करता है रे 1 के बीच में और रे 2 के बीच में, इतना पाथ डिफरेंस आना चाहिए बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द apparatus with relative to with respect to ether. Now the problem is कि ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए आपका, and because of this path difference there will be slightly change in the constructive and destructive interference conditions, and because of this these fringes will change. Let's say आपका जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे आप पैटर्न देख रहे हैं, उस पे फर्स्ट जो ब्राइट मैक्सिमा आना है वो 0 पोजीशन पे आना था, but because of this path difference this pattern will now shift towards right, towards left maybe, but because of this path difference the central maxima, the position of central maxima will shift. But the problem is कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था उस मोमेंट पे, क्योंकि जो भी हमारा पाथ डिफरेंस आया है दैट इज द फर्स्ट, बिना पाथ डिफरेंस के हम इंटरफेरेंस पैटर्न नोट ही नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा हमारा, लेट्स से वो इस ओरिएंटेशन में आएगा वेयर AC इज हॉरिजॉन्टल लेंथ, AB इज वर्टिकल लेंथ. In this case we have a superposition pattern, we have a interference pattern, and now we do not know कि ओरिजिनल इंटरफेरेंस पैटर्न क्या था जब मोशन नहीं होगा, जब मोशन नहीं होगा, जब ये पाथ डिफरेंस नहीं होगा सिस्टम में, उस टाइम पे इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा वो हमारे पास नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप द मोशन ऑफ अर्थ. अगर अर्थ मोशन में है तो इतना पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा, एंड दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन whether this path difference is there or not, whether because of this path difference there will be a shift in, there was a shift in interference pattern or not, वो हमें नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, दे जस्ट टर्न द apparatus थ्रू 90 डिग्री, दे जस्ट टर्न द apparatus थ्रू 90 डिग्री. पहले था A और B, ऐसे था A B C, ये ज्योमेट्री था, ये ओरिएंटेशन था, आई विल से उसका माइकलसन मोरले का. एंड बिकॉज ऑफ दिस इस रे में और इस रे में एक पाथ डिफरेंस आया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, दिस आई एम कॉलिंग एज ओरिएंटेशन 1. नाउ व्हाट दे हैड डन इज, उन्होंने उसको पूरा 90 डिग्री से रोटेट किया, ये A यहीं रहा, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे B आ गया, राइट, एंड दे कॉल दिस एज ओरिएंटेशन 2. Now again in this scene, again in this orientation, now AB comes into the line of motion, no sorry, AC comes into the line of motion and AB is become perpendicular to it. So the optical path AB is now longer, optical path AC is now longer than optical path AB, and it will be by the same amount, delta T, the time difference in orientation 2 will be, of course it, the magnitude of this delta T will be same, du square by C square. Now we again record interference pattern in this orientation. हमने इस orientation में interference pattern observe किया, और हमने इस orientation में हमने interference pattern observe किया. Now the
time difference and the path difference between ray 2 and ray 1 in both the orientations will be equal to, okay, delta x whole delta x. एक बार इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया, दूसरी बार किया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट शुड बी इक्वल टू ओरिएंटेशन 1 माइनस डेल्टा एक्स ओरिएंटेशन 2, राइट। इस केस में क्या था, डेल्टा टी ओरिएंटेशन क्या था, माइनस डी यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर था। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल सी फ्रॉम माय नोट्स, इफ यू कैलकुलेट इट इन ओरिएंटेशन 2 अगेन, द डेल्टा टी the time difference between these two rays 1 and 2, the path difference was this. The path difference was du square by c square. Okay, this was path difference, not time difference, it was path difference. Time difference भी देख सकते हैं, delta t in orientation 2 will be minus du square by c cube, and correspondingly the path difference will be minus du square by c square. So the total time difference in both of these orientations, it will be twice of du square by c square. अगर आप उस पहले वाले में से ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी 2du square by c square. Now the thing is, this path difference, this much path difference will introduce a shift in the interference pattern. इस ओरिएंटेशन में हमने एक बार इंटरफेरेंस पैटर्न देखा और फिर उसके बाद इसमें देखा। तो अगर आपका ईथर के साथ अर्थ का वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड from orientation 1 and from orientation 2. Now I want to see how much shift will be there in interference pattern, and the shift will be because of this path difference, right? So we know when path difference between two rays is one wavelength, when this path difference between two rays is one wavelength, 1 lambda equal to the length of 1 lambda, the pattern will shift through one fringe. The pattern will shift through one fringe, and the number of shifting in fringe lines n lambda will be given by 2d u square by c square, right? It will be 2d u square by c square. जो path difference था वो, that path difference will decide by how much amount the interference pattern will shift by this equation. If it is shifting with lambda, if the path difference is lambda, it will shift by exactly one fringe. One fringe will go to either left or to right. So I can find the number of number of fringes and that will move from the original position, that is n, by this formula 2d u square by c square by lambda. So this n will be the number of changes, number of fringes which have shifted from the original position, original center of maximum. So if I insert all this thing, the distance between point A and B, they have taken at that time, they have taken distance as 11 meter. 11 meter का distance था vertical B and horizontal B. Lambda, the light ray, the source of light, they have used as 600 nanometer. 600 nanometer उन्होंने यूज किया था. C, of course we know velocity of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. और क्या बच गया? U. U is the relative velocity of Earth with respect to ether, and that will be our orbital velocity of Earth. Orbital velocity of Earth is, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, orbital velocity of Earth is 30 kilometer per second. 30 kilometer per second. Earth is orbiting around the Earth with this velocity, 30 kilometer per second. So the setup, the Michelson-Morley setup and the ether will have a relative velocity of 30 kilometer per second. So if I insert d, c, lambda and u in this equation, the value of n will come to be, if I calculate, the value of n will come to 0.4, right? The value of n will come to 0.4. Now
इसका क्या मीनिंग है 0.4 का? इसका ये मीनिंग है, सपोज इन ओरिएंटेशन 1 आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जो था, ये मान लीजिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज ब्राइट फ्रिंज, दिस अगेन इज ब्राइट फ्रिंज, this again is bright fringe, and the distance between them is, let's say it is 1 unit. It is 1 unit. So in orientation 2, let's say orientation 1 में जो था, interference pattern was something like this. In orientation 2, the interference pattern will be something like this. Right? And this shift is because of the relative motion, this shift and this shift. This shift actually corresponds to n is equal to 0.4. So this shift is because of the relative motion of Michelson-Morley setup with respect to ether, which we have derived, and the magnitude of the shift is n is equal to 0.4. जो इसका एक यूनिट होगा, जितना डिस्टेंस इसके बीच में था इंटरफेरेंस पैटर्न के, उसका ऑलमोस्ट हाफ टाइम वो शिफ्ट हो जाएगा. जहां पे पहले ब्राइट था वहां पे डार्क आ जाएगा, जहां पे डार्क था वहां पे ब्राइट आ जाएगा. ऑलमोस्ट इट विल शिफ्ट विद 0.4. नाउ द पॉइंट इज, अगर ईथर सच में, अर्थ सच में ड्रैग होता, ईथर वाला कॉन्सेप्ट सच में अगर होता, तो वी विल बी एबल टू मेजर दिस शिफ्ट वेरी इजीली, बिकॉज द रिजोल्यूशन ऑफ the telescope which we were using was n is equal to 0.01. हमारा जो टेलीस्कोप था, जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स को देख रहा था, उसकी एबिलिटी जो था, उसका जो लिस्ट काउंट था, उसका लिस्ट काउंट वाज so that it can even measure the shift in fringes if it is 1/100th of the unit. 0.01 से भी अगर शिफ्ट होगा तो वो भी हम नोटिस कर सकते थे. And our calculated shift was 0.4. That means it is 40 times the least count of the apparatus. So yes, of course, this shift can be detected very easily. But expected क्या था कि, लिख देते हैं, expected shift was 0.4 units. Least count was 0.01 units. And observed shift was, उनको मिला कितना, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड शिफ्ट 0.4 होना चाहिए था. ऑब्जर्व्ड शिफ्ट वाज 0 यूनिट्स. दैट मींस नो शिफ्ट. उनको कोई शिफ्ट नहीं मिला इंटरफेरेंस पैटर्न में, ओरिएंटेशन 1 एंड ओरिएंटेशन 2 में. राइट? सो दिस Michelson-Morley experiment, which was designed to search for a fundamental frame of reference, was designed to search for a fundamental frame of reference. It fails. So, as with our assumptions and with our calculations, the expected shift was this, and we had not observed any shift. That means this Michelson-Morley, the aim of this Michelson-Morley fails. Right? So, I can say the negative results of MM experiment, Michelson-Morley experiment, ये आता है डिस्कस करने के लिए कि डिस्कस नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ MM एक्सपेरिमेंट्स ऑफ Michelson-Morley एक्सपेरिमेंट. सो ओके, 1887 में हुआ था एक्सपेरिमेंट ये.
अभी देखा मैंने नोट्स में है, तो 1887 में हुआ था, सो यू कैन से अराउंड 15 years बिफोर द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. So the actual shift of interference pattern observed was very small, almost negligible, which indicates that there is little or no relative motion between the earth and the ether. Between the earth and the ether. अब अगले 10 साल क्या हुआ, 1887 से 1900 तक क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारी बार रिपीट किया गया, ज्योमेट्रिकल लोकेशंस चेंज करके रिपीट किया गया, अलग अलग उस पे अर्थ का जो रोटेशन होता, रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, उनका खुद का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से इक्वेटर पे अलग वेलोसिटी होता है, पोल्स पे अलग वेलोसिटी होता है, इन बिटवीन मेरिडियंस पे अलग वेलोसिटी होता है. तो अलग अलग जगह पे इसको रिप्रोड्यूस भी किया, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करने की कोशिश की, बट ईच टाइम दे फेल्स. द MM experiment give the negative result that suggests that there is no relative motion between the earth and the ether. ये ईथर वाला कॉन्सेप्ट तो इस माइकलसन मोरले रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट से नलीफाई हो गया, इसको नहीं मान सकते थे. कुछ बीच बीच में अलग साइंटिस्ट भी आए, फ्रॉम 1887 टू 1900 के बीच में कुछ कुछ अलग साइंटिस्ट आए. एक था फिट्जगेराल्ड 1892 में, दिस फिट्जगेराल्ड एंड लॉरेंस, इन दोनों ने मिलके एक एजम्पशन किया, एक प्रपोज किया कि ये क्यों फेल हुआ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. उन्होंने कहा, बड़ी सिंपल चीज कही, नहीं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज कही, बड़े सिंपल वर्ड्स में. उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ओरिएंटेशन था ए बी और सी, अगर आपको याद है तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा था, जो टाइम बन रहा था, दैट वाज डी डिवाइड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, राइट. इट वाज समथिंग लाइक दिस, डी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. वाइल इन दिस केस दे वर शोइंग कि इस तरफ जाएगा लाइट तो सी माइनस सी हो जाएगा, और एक तरफ वापस आएगा तो सी प्लस सी हो जाएगा, इस टाइप का कुछ था, राइट. तो लॉरेंस ने बोला, फिट्जगेराल्ड एंड लॉरेंस ने बोला कि when this whole apparatus is moving with velocity u with respect to ether, there is a interaction between ether and material body. There is an interaction between ether and material body moving relatively, and as a result, this body which is present in this frame of reference, this body will get shortened in dimension parallel to its relative velocity. कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में this distance, this material object will get shortened. ये छोटा हो जाएगा जब ये भाग रहा होगा u वेलोसिटी से, तो इस पैरेलल डायरेक्शन में this will get smaller, the dimension will get smaller, right. So okay, such that if L not be the length of body when at rest, then the modified length L, इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा, AB का लेंथ होगा, this length of AB will get modified. Length of AB will get modified. And how much it will modified? The actual length, मान लीजिए L naught है, and this is the modified length because of the relative motion. The modified length will become this, U square minus C square. L is equal to L naught root of 1 minus U square by C square. So अगर ये होता है, ऐसा होता है, और मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ modified length को, now my D will become D naught root of 1 minus U square by C square, and if I use this type of assumption, yes, delta T, the calculated delta T will be almost equal to 0 in this case. But the problem is, without anything, without any proof, without any theory, they have just suggested कि भाई जो लेंथ मोशन की डायरेक्शन में होगा वो लेंथ छोटा हो जाएगा, और कितने डायमेंशन से छोटा हो जाएगा, जितना उनको चाहिए था. उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली बोल दिया कि हाँ इतने से छोटा हो जाएगा ताकि डेल्टा टी को वो 0 प्रूव कर सके, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जस्टिफाई कर सके. उन्होंने उतना लेंथ को शॉर्टन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, right. But for this expression they does not have any proof at that time.
at 1892 they did not have any proof that length will get shortened while in the motion. So yes, length contraction hypothesis, this length shortened length contraction hypothesis can explain the negative result of Michelson-Morley experiment. Yes, but the proof of this is not yet established. At that time, the proof of this was not established. It later on in 1905, it get explained, and yes, this was true. Actually, length will get shortened, right? Okay, so this okay, again the same thing, the same negative results of Michelson-Morley, they were also explained by Einstein in 1905. In 1905 इन्होंने बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया. इन्होंने कहा कि ये लाइन थी, ए लाइन थी, बी लाइन थी, सी लाइन थी. इसमें ये कह रहे थे कि वेलोसिटी विल बी c minus u, c plus u while going in opposite directions. In this case, velocity will be root of c square minus u square, something like this. So earlier Michelson-Morley states that the velocity of the relative velocity of light will be something like this: c minus u, c plus u, root of c square minus u square. But in 1905, Einstein states that the velocity of light, the speed of light, will not change with respect to frame of reference. If frame of reference is moving, then also speed of light, velocity of light will remain same. So instead of these type of calculations, of velocity, relative velocity of light, the velocity of light will always remain same. This c in this direction, c again in this direction, in all the directions, whether it is moving towards the whether the light is moving with respect to frame of reference or opposite to the frame of reference or in perpendicular direction, in any direction, speed of light will remain same. That will be c. So if I assume these things, then of course the time difference, time taken by light, ray 1 will be d by c, and by ray 2 again it will be d by c, because सारा ही speed of light हो गया, c हो गया, c minus u, c plus u सब हट गया, just ये रह गया. So again in this case delta t will be 0 and path difference will be 0 and n will be 0. The change in interference pattern will be 0. So from this postulate also I can say that this negative results of Michelson-Morley experiment can be explained, that c will not change with respect to frame of reference, it will have a same value. And from here, later on Einstein proved this thing also. From here on, from this point onwards, all said that speed of light is a universal constant. वो यूनिवर्सल वर्ड यहां से शुरू हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट कैन नॉट डिपेंड on the motion of frame of reference, on the motion of medium, or the motion of or on the motion of observer. It will be a universal constant. It will remain in it will remain have a same value, which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. इसका एक सिंपल लॉजिक, इसका एक सिंपल मीनिंग यही भी है कि मान लीजिए एक पर्सन खड़ा है, उसने एक फ्लैश लाइट ऑन किया. Now from the point he on this flashlight, from the point he on this torch, the light will travel in all the directions with same velocity c, right? With same velocity c. Let's say एक flashlight on हुआ इस direction में, rest पे था, so the velocity of light will be c in this direction. So now suppose this observer is moving with velocity u and he on a flashlight, then again the velocity of light will be c. So if a person sees this activity from outside the frame of reference of this observer, then in classical mechanics, what should be the speed? Speed should be c plus u.
राइट, जो उस ऑब्जर्वर का खुद का स्पीड था और जो स्पीड ऑफ लाइट था। बट आइंस्टीन denied this thing and he said whether the observer is moving or not, velocity of c will always remain c, velocity of light will always remain c, whether whether the source is moving or not। वो वहीं से फिर आ गया कि ये c माइनस यू, c प्लस यू, रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एवरीथिंग शुड बी c, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ फोटोन में, irrespective of relative motion it will be c। So again if I take this as c, this will explain the negative results of Michelson-Morley experiment। So Michelson-Morley experiment से दो चीजें प्रूव हुआ, एक ही चीज प्रूव हुआ मोस्टली कि there is no such medium called ether in which earth is dragging or other things are dragging, there is no relative motion between earth and ether। एंड दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट प्रूव हुआ दैट स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये दो चीजें प्रूव हुआ आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से, राइट। यहां से इसके बाद आफ्टर 1905 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शुरू हुआ, पोस्टुलेट्स शुरू हुए और फिर कुछ डेरिवेशन शुरू हुआ एंड देन देयर विल बी सम एप्लीकेशंस। इन दिस 15 years ऑल वर थिंकिंग कि हाँ वो उसका ईथर का कोई कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ड्रैग होता है एंड देयर विल बी सम ऑल दोस थिंग्स। बट एट दिस पॉइंट दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टेल्स अ लॉट अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड द मोशन ऑफ photons, motion of light photons। So before going into this special theory of relativity, there are two basic postulates on which we will derive a lot of things। These postulates are okay, so these postulates are, first postulate is the laws of physics, the laws of physics are the same in all inertial frame of references। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि suppose there is a inertial frame of reference, there is another inertial frame of reference s dash, if any law is of physics is applicable on this frame of reference s, then the same law of physics will be applicable on this frame of reference s dash। For example, if law of inertia is is held good in frame s, then law of inertia will also hold good in frame s dash। अगर किसी फ्रेम s में कोई इनर्शिया का लॉ फॉलो कर रहा है बॉडी, and if s dash is a inertial frame, again it is a inertial frame, both are inertial frame, then the same law of inertia will also be hold good in s dash। अगर inertial frame है दोनों, तो दोनों में सेम लॉ फॉलो करेगा। फर्स्ट लॉ फॉलो करता है, सेकंड लॉ भी फॉलो करेगा, F इजिकल टू एम में फॉलो कर रहा है तो सेकंड में भी करेगा, अगर इनर्शियल है तो दोनों। इसका समझने का एक उल्टा तरीका भी है। सपोज एक फ्रेम S है, इनर्शियल है, यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे आपने फोर्स लगाया F और उसके फोर्स लगाने के बाद आपकी एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ बॉडी में, राइट। दूसरा फ्रेम है S डैश, इस फ्रेम में भी आपने फोर्स लगाया F और ओके F2 फोर्स लगाया, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक दूसरा एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। बट पॉइंट इज इफ S एंड S डैश बोथ आर इनर्शियल फ्रेम, if both are inertial frame, then yes, second law of motion is holding good in both the cases with different magnitudes of course because the force was different। So in both the frame S and S dash, second law of motion is holding good। but अगर मान लीजिए S में तो कर रहा था F इजिकल टू एम में फॉलो, सेकेंड लॉ फॉलो करता था S फ्रेम में, एंड लेट्स से कि S डैश इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम,
S dash is a non-inertial frame. In that case, if you apply a force F2, then acceleration will not be equal to A2, it will be something else, plus I can say M A dash, where ma dash is fictitious force present because it is a non-inertial frame. अगर ये non-inertial है, that means कि in the absence, even in the absence of force, it is accelerating. The body is accelerating. So in this case, you can say this particular frame of reference is not holding second law of motion, right? So in this case, laws of physics will not be same in both the frames. S में F is equal to M में है, S dash में second law follow नहीं कर रहा है, कुछ और follow करता है, because it is a non inertial frame. अगर दोनों inertial है, जैसे ये ऊपर वाले थे, दोनों inertial frame है, तो that means both all the laws, अगर एक law S में follow होता है, तो दूसरा law वही same law S dash में भी follow होगा, whether it is a law of conservation of momentum, conservation of energy, law of inertia, second law of motion, any law, if it is following in S, it will also follow in S dash. Whatever the equation of motion in we are getting in S, the same type of equation of motion we should get in S dash if both S and S dash are inertial frame. अगर नॉन इनर्शियल होगा तो फिर एक अलग बात है, फिर तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं लगेगा उस पे. सेकंड पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. The second postulate of STR is that speed of light is constant. जो वहां से माइकलसन मोरले का रिजल्ट आया था, speed of light in free space has same value in each direction, in any direction, irrespective of velocity of velocity of frame of reference, it will be constant, has same value, or you can say it is invariant to transformation. अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन को, वो भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, right? So with these two postulates, special theory of relativity was built and some transformation equations was set up, right? And with the help of those transformation equations for time, for position, we have derived some interesting phenomena which I will discuss. Okay, so ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का बात करते हैं थोड़ा सा. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होता है, देन वी विल सी कि उनमें क्या क्या डिफरेंस आया है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सपोज देयर इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, there is another frame of reference S dash. Let's say this frame of reference S dash is moving from S with a velocity v, right? S dash is moving away from frame S with velocity v, and initially let's say at t is equal to 0, S and S dash were coinciding. ये शुरू में S और S dash जो था उनका जो ओरिजिन था, they were coinciding at 0. And let's say from the beginning of time, frame S dash start moving with a velocity v, right? So in this case, let's say this is the position vector, xyz is the position vector of an object as observed from frame S, and the position vector of the same point A as observed from S dash, let's say, is x dash y dash z dash.
अब दोनों मोशन में है तो एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दूसरा होगा और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दूसरा होगा, राइट। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको कि हाउ फॉर अ पॉइंट, फॉर अ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन वेक्टर्स, yes of course the position vectors will be dependent on the origin of frame of reference. For example, मान लीजिए एक ट्रेन चल रहा है और उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, एक बंदा उसके विंडो पे बैठा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। सो एट t is equal to 0, let's say s and s dash is coinciding. Now as t progress, अगर ट्रेन चलना शुरू हो जाता है with constant velocity, let's say, so the person standing at platform, let's say, that has frame of reference s, and the person which is sitting on the window of this train, let's have a frame of reference s dash. And now both of those are observing a point or a tree. You can say the position vector of that tree, let's say, is xyz according to s, and x dash y dash z dash according to the person sitting on the window of the train, that is s dash. So of course, with the motion, the position coordinates will change in s as well as in s dash. दोनों का जो होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट, दे विल बी डिफरेंट। उसको पेड़ एक जगह खड़ा दिखाई देगा, दूसरे को थोड़ा सा मोशन में दिखाई देगा, एंड इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हाउ दे विल चेंज, एक्चुअली दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कि भाई एस एक्स डैश में और एस में एक्स में क्या रिलेशन होगा, वाई डैश और वाई में क्या रिलेशन होगा, जेड डैश और जेड में क्या रिलेशन होगा। All these things are given by, okay, fourth parameter भी ले आते हैं, the time parameter भी ले आते हैं, it will be t and t dash, right? So the Galilean transformation are these type of transformations which relates coordinates of any event observed from one frame to another frame. So let's say these type of type of equations are called transformation equations. So first transformations are Galilean transformation. एक बड़ी सिंपल थी, उन्होंने Galilean transformation जो है, as per this, the relation between this x dash and x will be, x dash will be equal to x minus vt. The relation between this will be x dash will be equal to x minus vt. v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s dash है, t क्या है, टाइम टेकन है, जिस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया है t है। तो x क्या है, सिंपल x s dash s फ्रेम से क्या पोजीशन था वो है, x dash क्या है, s dash फ्रेम से क्या पोजीशन था। सो द पोजीशन मेजर्ड फ्रॉम s dash can be related with the position measured from s as well as the velocity of frame of references and time taken and the time at the instant at which observation was taken. So this x dash is equal to x minus vt is your Galilean transformation. As per the Galilean, this type of position coordinates can be calculated like this, where the motion is in direction x, so it will not impact the measurements in y direction. Y dash will be equal to y. Similarly, z dash is equal to z. अगर भाई x डायरेक्शन में ही मोशन है तो केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x के ही चेंज होंगे, y और z तो सेम रहेगा। सिमिलरली फॉर टाइम आल्सो, टाइम के लिए भी गैलीलियन ने कुछ ऐसा नहीं किया, he just said the position vector of any object, if it is given in s coordinates, I can find the position coordinates of that object in s dash by calculating these things, s x dash, y dash, z dash, t dash, where y, z, t will be same, x will change as per the velocity of the frame of reference. अगर velocity 0 हो जाती है तो आप you can see x dash will be equal to x, and of course both of the observer will observe the coordinates with same magnitude.
दोनों सेम दोनों की मेजरमेंट सेम होगा अगर v 0 हो जाता है तो। अगर v स्टार्ट हो जाता है, v की वैल्यू कुछ आ जाती है, तो द पोजीशन कोऑर्डिनेट x विल चेंज स्लाइटली। नाउ with this Galilean transformation, let's say I implicate my two basic postulates of STR. My two basic postulate of STR पे, STR के postulates पे, if I want to implicate these Galilean transformation, then I want to see what will happen. Right. Now I will assume a hypothetical situation. Let's say there is a frame S, there is a frame S dash, S, S dash. These both are moving. They both are moving, and S dash is moving with a velocity V, let's say. Right. So at a moment, let's say both coincides. At a moment, let's say both coincides. These both frame of references coincide, and after that they start traveling with this velocity v, and S dash will move apart from S. Now at this instant, let's say at this instant they flash a light. एक सोर्स को उन्होंने चलाया एंड उस सोर्स ने लाइट को एमिट किया, and just after that they start moving, the frame S dash start moving away from frame S. Now इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट, इस S और S डैश ये ओवरलैप करता था, कर रहा था जिस मोमेंट पे उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन किया, उस मोमेंट पे S और S डैश ओवरलैप करता था, और आफ्टर उसके बाद वो v वेलोसिटी से मूव करने लग गया. सो इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट दिस पॉइंट O, इस पॉइंट को मैं O नाम देता हूं. सो इक्वेशन ऑफ मोशन as seen by this observer O in frame S, it will be x square plus y square plus z square is equal to c square by t square, is equal to c square t square. This is nothing, this is spherical wavefront equation. अगर किसी लाइट को आप ऑन करते हैं तो it will cause a spherical wavefront. So this is the equation for spherical wavefront. Now similarly, this spherical wavefront equation, origin of spherical wavefront equation, from if I observe this from equation, if I observe this from frame S dash, in frame S dash, what will happen, how this equation of motion will change, it will be simply, it will be x dash square plus y dash square plus z dash square is equal to c square t square, right? C square t dash square, of course. Now if I apply Galilean transformation to these, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ने उस लाइट को स्फेरिकली डाइवर्ज होते हुए देखा है, उन दोनों का इक्वेशन ये है. नाउ इफ आई अप्लाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाज x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z, t dash is equal to t. So if I apply these type of Galilean transformation in equation of motion in this thing, then it will be x minus vt square plus y square plus z square is equal to c square t square. If I open this, it will be x square plus y square plus z square plus v square t square minus 2x vt is equal to c square t square. So this will be the equation of motion of light photons. This will be the equation of motion of light photons as observed from frame S dash. और ये क्या था, equation of motion of light photons as observed from frame S. Now you can see these two things are different. These two equations are different. Now if these two equations are different, then I had said you in postulates of STR, it was that laws of physics should remain same in
both the frame of references if both the frame of references are inertial frame. So अगर एक spherical wavefront का equation ये है, अगर एक spherical wavefront का equation ये है, तो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी स्फेरिकल वेवफ्रंट का इक्वेशन ये ही आना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आनी चाहिए थी. So that means with this type of thing, with this type of transformations, with this type of Galilean transformation, the postulates of STR are not followed. So you can say that if in special theory of relativity, Galilean transformation cannot work, right? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाया था कि अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मूव करता है v वेलोसिटी से, then position vectors of these things can be given by this set of equations. This Galilean transformation cannot be used in special theory of relativity, right? So the Galilean transformation, which of course are very good in classical mechanics, अपना सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है जिसमें वेलोसिटी बहुत कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं होता, in all those things Galilean transformation works very well. But in this case, in case of STR, the Galilean transformation fails to provide us the equations which can relate position vectors, or we can say any vectors, in one frame to another frame. Now again in 1906 1905 लॉरेंट्स, जिन्होंने वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला आइडिया दिया था, उन्होंने शुरू से फिर 5 साल बाद 6 साल बाद दोबारा शुरू किया with the help of these STR postulates and with the help of that Einstein theory कि velocity of light will remain same in all direction irrespective of frame of references. Lorentz again established some transformation equations. गैलीलियन फेल हो गया था तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया, and these Lorentz transformation equation explain a large number of things that we will see. Lorentz transformation equations, इनको डिराइव करते हैं, देखते हैं क्या क्या था. बड़ा सिंपल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, वही सेम कहानी आया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, they both are inertial frames x y z x dash y z z dash. Let's say this is s dash. Let's say the position of point P is x y z t as observed by s, and r x dash y dash z dash t dash as observed by s dash. s dash ने ऑब्जर्व किया तो ये पैरामीटर्स आए, s ने ऑब्जर्व किया तो ये पैरामीटर्स आए, right? The event happening at point P is observed by both is observed from both frame of references, and the event coordinates were xyzt and x dash y dash z dash t dash as seen from s and s dash respectively, right? Now according to Galilean transformation, the coordinate equations was x dash is equal to x minus vt, and inverse transformations were x is equal to x dash plus vt dash, right? These were the Galilean transformation, right? Lorentz replaced these Galilean transformation equations by, he said, x dash should be equal to x minus vt. Yes, it is true, but again there should be a factor, there should be a constant factor gamma, which will relate the position vector x dash with the quantity x minus vt. And in inverse transformations, x will be equal to x dash plus vt. Yes, it is true, but the same will be coordinated, the same will be combined with the same factor gamma. तो उन्होंने लॉरेंट्स ने x डैश और x की जो इक्वेशंस था उनमें गामा को मल्टीप्लाई किया,
and he said the this coefficient gamma has to be same in both the transformation equations, because अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाना है, तो अगर हम गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वैल्यू गामा से मल्टीप्लाई करना होगा हमें जब हम दूसरे से पहले में आएंगे। इससे पहले लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ चीजें हुआ था जिनमें ऐसा टाइप का कुछ किया था किसी ने कि बीटा एक्स माइनस वीटी होगा, कि जितना बढ़ना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से उतना नहीं बढ़ता है, एक फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। वो ऐसा कुछ एज्यूम किसी ने किया था, उससे कुछ कैलकुलेशंस किया था, बट उन्होंने x इज इक्वल टू फिर अलग एक फैक्टर बना लिया था डेल्टा एक्स डैश प्लस वीटी डैश, कि अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो अलग फैक्टर से करेंगे। लोरेंट्ज जस्ट सेड दैट if according to STR, according to special theory of relativity, if laws of physics are same in both the frames, if laws of physics are same in both the frames, then the constant which defines the transformation equations should also be same. So he assumed abhi I am saying assumed, actually he in ये गामा जो उसने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन इक्वेशंस में, it was assumptions only, but because of these assumptions we can arrive at some equations which will define some physical phenomena very correctly. So these assumptions were correct. हमेशा ऐसे ही होता है, एक थ्योरी बनाई जाती है, उस थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स किए जाते हैं, कुछ assumptions किए जाते हैं, उन assumptions की हेल्प से रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को if these results matches with experimental values, then of course all these assumptions, all these postulates can be accepted, right? So similarly in this case also Lorentz assumed that these transformation equation can be set if I introduce a physical parameter, if I introduce a constant gamma in both the equations, and yes this physical constant will remain same in both the equations, right? तो यहां से ये इक्वेशन उन्होंने मॉडिफाई किया लोरेंट्स ने, and these equations will give rise to a large number of things that I will say. Okay, तो क्या था इक्वेशंस, ऊपर से लिखते हैं x dash is equal to gamma x minus vt, x is equal to gamma x dash plus vt. Now I have to solve this combined equations vt dash. So this equation I am calling as a, this equation I am calling as b. I am using equation a in b, right? So it will be x, this equation will be x is equal to gamma x minus vt plus vt dash, right? So if I open this bracket, it will be x is equal to gamma square x minus gamma square vt plus gamma v t dash, right? इसको इस तरफ ले आते हैं, it will be 1 minus gamma square x is equal to, okay इसको भी ले आते हैं, plus gamma square vt is equal to gamma v t dash, right? So my t dash will become 1 minus gamma square divided by gamma v x plus gamma t, right? उसको नीचे लाएंगे gamma v को, तो it will be cancel, only gamma t will be there. So this equation actually tells you the transformation of time from frame s dash to s. See, Galilean transformation talks about
Galilean transformation talks about x minus vt, the position coordinates transformation की position coordinate कैसे transform होंगे and time he was assuming it will remain same. Time measurements will remain same in both the inertial frames if a time measured in frame S will be same as time measured in frame S dash. But as soon as Lorentz introduced this concept of gamma in set of transformation equations, the introduction of this gamma will led to a fact that time measurement will also change from frame to frame. अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट 5 सेकंड में हो रहा है तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जरूरी नहीं है वो 5 सेकंड में होगा. द टाइम डिफरेंस, द टाइम मेजरमेंट विल आल्सो चेंज एंड इट विल आल्सो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So this equation C is nothing. It is a transformation equation of time from one frame to another frame. It is the transformation equation of time from one frame to another frame. Transformation equation of position हमारे पास था पहले से, right? अब हम टाइम का भी निकाल लिया है. Now the next task for me is to determine the value of gamma. कि गामा जो कांस्टेंट हमने लिया था उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गामा I will assume a experiment. Let's say दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वही सेम ओ डैश कोइंसाइड करता है t इज इक्वल टू 0 पे. फ्लैश ऑफ लाइट मैंने ऑन किया. नाउ फ्लैश ऑफ लाइट ऑन किया है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइट पल्स इन फ्रेम एस फ्रेम से अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखता हूं लाइट पल्स का मोशन का, दैट विल बी x इज इक्वल टू ct. एज सिंपल एज दैट कि जितना टाइम होगा उसके हिसाब से उसका x कोऑर्डिनेट वो दूर चल जाता जाएगा, डाइवर्जेंट वेव फ्रंट हो जाएगा. सिमिलरली x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइट पल्स as observed from s dash will be equal to x dash is equal to c t dash, right? C t dash. Now if I insert the value of x dash and t dash, from my previous page, then what will happen? We will see x dash का क्या वैल्यू था, gamma x minus vt. Gamma x minus vt was the value for x dash. c and t dash का क्या वैल्यू था जो भी पीछे ड्राइव किया, this whole value of t dash if I insert here multiply by c, it will be c gamma t plus cx 1 minus gamma square by gamma v. So this will be the I can say transformation equations of a light wavefront which is spreading from the O dash, which is spreading out from the O dash. So if I solve this, it will be gamma x minus cx 1 minus gamma square divided by gamma v is equal to c gamma t plus gamma v t. राइट, इसको इस तरफ ले आया हूं, गामा वीटी को उस तरफ ले गया. तो x को कॉमन लिया है, इट विल बी गामा माइनस सी 1 माइनस गामा स्क्वायर डिवाइड बाय गामा v इज इक्वल टू सी गामा टी 1 प्लस v बाय सी. सी गामा टी कॉमन ले लिया मैंने इनसे, वो 1 प्लस v बाय सी आ गया वहां से, राइट. नाउ इन दिस फैक्टर, if I try to solve this, it will be गामा भी मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ से. ओके, इस वाले पार्ट से भी गामा कॉमन ले लेता हूँ. इट विल बी x गामा 1 माइनस c 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर v. यहाँ से गामा को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे नीचे गामा स्क्वायर आ गया, वहां पे ऊपर गामा आ गया, तो उस गामा को कॉमन ले सकता हूँ मैं, राइट. सो इट विल बी c गामा t 1 plus v by c. Now if I try to find, okay, x को यहाँ रखते हैं, बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं.
it will be c gamma t 1 plus v by c डिवाइड बाय इसको बाकी सबको यहाँ ले जाता हूँ गामा 1 माइनस c इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर डिवाइड बाय गामा स्क्वायर v, राइट। गामा को कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, राइट, और नीचे वाले को भी ओपन कर सकते हैं। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस c इंटू टी 1 प्लस v बाय c एंड इन डिनोमिनेटर गामा तो चला गया, इट विल बी 1 माइनस c बाय v, c by v, this c and this v, and in bracket if I take this gamma square inside, it will be 1 by gamma square minus 1, 1 by gamma square minus 1, right? So my x is equal to all this thing, this thing, and I can see initially in frame s my equation of spherical divergent wavefront was x is equal to ct. So if I insert ct instead of this x, it will become ct is equal to ct 1 plus beta. This v by c I am calling as beta. This v by c I am calling as beta. Right. This v by c I am calling as beta. So it will become, the numerator will become ct 1 plus beta divided by 1 minus c by v will be 1 by beta upon 1 upon gamma square minus 1, right? So b by c को बीटा माना है और गामा की वैल्यू मेरे को भी फाइंड करना है। So this t will cancel out, this ct will cancel out in from both the terms, and the equation will become 1 plus beta, ये 1 हो गया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 plus beta is will be equal to 1 minus 1 by beta gamma square प्लस 1 by बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। 1 by बीटा माइनस 1 by बीटा स्क्वायर, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ओके, सो इफ आई ट्राई टू सोल्व दिस, इस 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। इट विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू 1 by बीटा माइनस 1 by बीटा गामा स्क्वायर, एंड इसको फिर फर्दर सोल्व करता हूं, 1 by बीटा गामा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 by बीटा माइनस बीटा, ये इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले आया, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा 1 minus beta square divided by beta. So this equation, if I cancel beta from both the sides, from this and this, it will be 1 by gamma square will be equal to 1 minus beta square, or you can say gamma square is equal to 1 upon 1 minus beta square, or you can say gamma will be equal to root of 1 upon root of 1 minus beta square, or you can say gamma will be equal to 1 upon root of gamma will be equal to root of 1 minus beta square. So gamma will be equal to 1 upon root of 1 minus beta का वैल्यू क्या था, v by c, so it will be v square by c square, right? So the value of gamma will be equal to 1 by root of 1 minus v square by c square in these assumptions. जो assumptions हमने मानी थी, उन assumptions में the value of gamma will be root of 1 minus v square by c square. So gamma is equal to 1 upon root of 1 minus v square by c square, and beta तो हमने खुद ही assume किया था, it was v by c, right? So this will give me relation between x dash and
x dash will be equal to, now x dash will be equal to gamma x minus vt. So gamma x minus vt, so it will be x minus vt multiplied by gamma, so it will be root of 1 minus v square by c square. So the transformation equation for position will be this: x dash will be equal to x minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. If you remember, in Galilean transformation, the transformation equation was x dash is equal to x minus vt, but in Lorentz transformation, the transformation equation is coming to be x dash is equal to x minus vt divided by an external factor, extra factor, which is root of 1 minus v square by c square. This factor is same, that is gamma. Gamma is coming like this, right? 1 upon root of 1 minus v square by c square. So this will be the position, this will be the transformation equation for position vector. I also want to find transformation equation for time. Time के लिए भी हमने calculate किया था. So this t dash is equal to gamma t plus 1 minus gamma square by gamma v x. ये हमने अभी ड्राइव किया था, जिसको हमने यूज भी किया था. I just want to insert the value of gamma in this, and I want to find the transformation equation which will connect my t dash and t, the time observed in frame s dash and frame s. So this t dash I can write as t. I will insert the value of gamma. It will be root of 1 minus v square by c square plus ऊपर आ जाएगा 1 minus 1 upon 1 minus v square by c square, नीचे आ जाएगा v divided by root of 1 minus v square by c square. I just inserted the value of gamma in all the places. So this t dash will be equal to t divided by, it will remain same, t divided by root of 1 minus v square by c square plus in numerator I can write 1 minus v square, okay, 1 minus v square by c square minus 1 in numerator, and इसके डिनोमिनेटर में मैंने लिख लिया है रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ दिस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आई एम राइटिंग द होल स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, बिकॉज मेरे को नीचे कैंसिल करना होगा इसको. डिवाइड बाय v डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाइड बाय x. सो दिस आई कैन सी, एक रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, ऊपर क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है. सो आई कैन कैंसिल दिस. इट विल बिकम t dash will become t is equal to t upon root of 1 minus v square by c square plus minus of vx by c square divided by root of v 1 minus v square by c square. If you see, this v denominator v will cancel with numerator v square, v रह जाएगा, right? v by c square, v x बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, it will be vx by c square, 1 से 1 कट जाएगा. इसके न्यूमिनेटर में जो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर था वो एक हाफ कट जाएगा और नीचे रह जाएगा बस. सो द होल टर्म विल बी समथिंग लाइक दिस. सो इफ आई टेक कॉमन दिस फैक्टर, denominator factor, my t dash will become t minus vx by c square divided by root of 1 minus v square by c square. So my transformation equation in t is coming to like this. So the time measurement in different frames will also be different as per the Lorentz transformations, and the connecting equation, the transformation equation which build these connections will be given by this. The position vector will be this, the time vector will be this, and y dash will be equal to y, z dash is equal to z. ये तो इसमें भी मान लिया हमने, ये इसमें नहीं चेंज किया है. So the transformation, the Lorentz transformation equation are something like this. ठीक है.
ये है क्या आया था अभी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, t डैश इज इक्वल टू t माइनस x v बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय root of 1 minus v square by c square. So these are Lorentz transformation equations which actually connects the coordinates measured from frame S to coordinates which will be measured from frame S dash. Right. Now, as you can see, if v tends to 0 or if v is very, very less than c, in this case, these transformation equations will reduce to the equation like this, x minus vt. नीचे वाला v c के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, तो सेकंड फैक्टर डिनोमिनेटर का 0 हो जाएगा, रूट ऑफ 1 विल बी 1, सो x डैश विल रिड्यूस टू x माइनस vt. अगेन t डैश विल v by c, जो सेकंड पार्ट है इसमें, ये जो पार्ट है v by c will be very small quantity, so it will be negligible as compared to t, and t dash will be equal to t. So in a special case where velocity is very low or velocity is very, very less than velocity of light, then these transformation equations will reduce to these equations, and these equations were Galilean transformation. So in exam they can ask you find the Lorentz transformation and show that at very low speeds, at very low velocities, the Lorentz transformations will be reduced to Galilean transformation. So yes, these are Galilean transformations, if you can recall. Right. And the value of gamma, अगर यहां से देखते हैं, गामा क्या था, गामा इज इक्वल टू था रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. So if v is very less than c, then of course denominator वाला फैक्टर भी 1 हो जाएगा and gamma will approach to 1. So अगर gamma approach करता है 1 को, then of course all these equations will reduce to Galilean transformation. The Lorentz transformation will reduce to Galilean transformation. क्योंकि एक यही डिफरेंस था गामा का, उसने गामा से मल्टीप्लाई किया था, अगर वो ही फैक्टर 1 हो गया तो all these things will reduce to Galilean transformation. एक और है इसमें डेरिवेशन, एक और वो है तो डिराइव इनवर्स लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. इनवर्स क्या है कि अभी तक हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है डिराइव, these are Lorentz transformation and these actually gives you an idea कि if event coordinates are given in frame S, है ना, given coordinates of S frame, S frame से जो आपने coordinates measure किया, and you can calculate the coordinates in S dash. S dash में आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे. इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, suppose you have values of coordinates in S dash frame and you have to find those values in S frame. S dash में given है और S में find करना है, then you can apply Lorentz inverse transformation which are x is equal to x dash plus vt divided by root of 1 minus v square by c square, and time coordinate can be represented by t dash, t is equal to t dash plus v x dash divided by c square divided by root of 1 minus v square by c square. Now you can see the beauty of this Lorentz transformations, that yes, even if I assume, if I invert the transformation equation, the basic structure of transformation equations are coming to be same. इसमें x dash था, x minus vt था, इसमें x है तो इसमें x dash plus vt हो गया है, but this factor root of 1 minus v square by c square is remaining same. Again, this thing is supporting my postulates of STR, that physics laws, physics equations should remain same in both frame of references, in S frame as well as in S dash frame.
physics laws, physics equation should remain same. That is what is happening here. x dash का और x का आप रिलेशन देखेंगे, this is similar. वो माइनस का और प्लस का साइन, that is because of the relative motion of s and s dash, but from mathematics point of view these equations follow actually same physics rules, right? So with these inverse, with these Lorentz transformation, I will prove in next class, I will prove some concepts which actually happen in real life. सर Yes. सर ये जो गैलीलियन की फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन है, ये शो क्या करती है? ये शो करती है कि अगर आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है और आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके कोऑर्डिनेट्स है किसी इवेंट के, तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स में आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे, वो ये प्रूव करता है x डैश इक्वल टू x माइनस वीटी। इवन जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है वो भी यही शो करता है। फॉर एग्जांपल, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक आप हो, एक आपका दोस्त है, आप एक जगह पे खड़े हुए हो, आपका दोस्त जो है वो भाग रहा है और दोनों ही बंदे एक सिंगल इवेंट को देखते हैं, एक सिंगल चीज को देखते हैं। आप उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, आपका फ्रेंड जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से भाग रहा है वो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखता है। तो आप दोनों ने जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को मेजर किया है, उन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन ये होगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। जो खड़ा हुआ है उसने x मेजर किया, जो भाग रहा है उसने x डैश मेजर किया। सो द रिलेशन बिटवीन दिस x एंड x डैश विल बी दिस। उसका कितना वेलोसिटी है, कितने टाइम बाद उसने उसको मेजर किया, किस टाइम इंस्टेंट पे उसने मेजर किया है। सो दीज transformation equation, this equation as well as this equation also, both of these equation will give you the relation between coordinates measured from one frame to another frame. Okay, so ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आज हुआ है। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, राइट? सर ये लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो x की वैल्यू है वो